What's the statement you can see? If Laplace of f of t is equal to f bar of s, then Laplace of integral 0 to t f of t dt is equal to f bar of s divided by s. It means what? When we apply integral to this f of t, where is the change? We have to divide f bar of s with s. That is the change. Now we start writing the proof of this integral property of Laplace transform. So when it is asking to find out integral property, statement will be given. Need not to worry about it. So how we are going to start? You can see. Let us assume that g of t value, g of t is equal to, this is our assumption. You have to memorize this one. ये जो value है bracket की value that we have taken as g of t, integral 0 to t f of t dt. Okay. Now what is my question is, if I want to find out the value of g of 0, can you tell me what is that? G of 0 means in place of t we have to put 0. 0 to 0. What is the answer? That will be 0 only, no? Same limit to same limit, if you want to integrate, your answer will be 0. Yes, sir. Okay. Now g of t value is this one. If you take the derivative on both sides, means so differentiating, so g dash of t is equal to, when differentiating, differentiation and integral will be cancelled. We get f of t, and the limits are from 0 to t. 0 to t. Now g dash of t is equal to, now upper limit minus lower limit. Upper limit means in place of t we have to put t only, minus Minus f of 0. F of 0. What is the value of f of 0? We discussed earlier, it is 0 only, I think. 0 F only. of 0 is equals to 0. Yes. F of 0 is equal to 0 means we got it as g dash of t value is f of t. Now you remember Yes. derivative property of Laplace transform by no बोले तो कैसा जी? आजकल जोड़ा क्या बात है कि no बोले तो this is not fair, no? By derivative property of, अभी आप लोग एग्जाम को 1.5 month है, जब तक पूरा बोल जाते फिर by derivative property of, बोलो अब्रार, what is the derivative property of Laplace transform? Come on, you know, we भूल गए सर. Laplace of f dash of t is equals to s into S. f bar of s minus f of 0. Yes, sir. That we have to write in terms of g. Laplace of g dash of t is equal to s into f bar of s. S into f bar of s and L of f of t will be same, but instead of f of t we are taking as g of t. So Laplace of g of t minus f of 0, but we are taking as g, so it is g of 0. And now already we proved that g of 0 value is equal to 0, right? So Laplace of g dash of t की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पर, F of t. yes, exactly f of t is equal to, this is s only, okay, and Laplace Yes. of what we have assumed as g of t value, 0 0 to t f of t dt. 0 to t f of t dt. This is now Yes. L of f of t is what is in our question. It is f bar of s, no? Yes, sir. F bar of s. This multiple terms comes to the denominator. F bar of s divided by s is equals to Laplace of integral 0 to t f of t dt. That's it.
This is the proof of our integral property of Laplace transform. Now when doing the problem जब आप करेंगे, जैसा ही आपको ये इंटीग्रल दिखेगा, उसमें 0 to t दिखेगा, डायरेक्टली उसके आंसर को एस से डिवाइड कर देना और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। खाली बस आंसर को एस से डिवाइड कर देना। ये कॉन्सेप्ट को Okay. समझने के लिए एक लेंदी प्रॉब्लम करता हूँ मैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। या नहीं तो एक छोटा प्रॉब्लम करके दूसरे में जाएंगे, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया। Okay. छोटा सा क्वेश्चन करके फिर उसमें जाएंगे। तो क्वेश्चन है, इस पे कर सकते हैं इसको। You can easily understand if I'm doing this problem. No problem, we'll do it. Okay, next, go to the next page. It's a very important and very lengthy problem. Just careful से देखिए अच्छे से steps पूरे। अबरार, you everything forget? Very good. नहीं सर, याद है सर। क्या याद है कि एक भी आंसर ना दे रहे आप? पूरा इतना बोल दो मेहनत सर। करके, इतना मेहनत करके पढ़ाया। Evaluate, नहीं सर, आपको evaluate Laplace of integral 0 to t. 0 to t means which property is this? Integral property. Cos at minus cos bt by t dt. First, tell me what is my question is, how many properties are involved here? Important question. It is very important. How many properties सर involved here? डिवीजन बाय टी, Yes. And इंटीग्रेशन विथ integral of t, integration property, इंटीग्रल ऑफ integral property of दिस Laplace transform, division by t. Now tell एंड me what डिवीजन बाय is टी। division by t? What is division by t property? वी Division हैव by टू t property. Yes. Yes. Come on. वी हैव टू इंटीग्रेट देम सर इन द एंड Yes. What in which limit and with respect to which variable? विथ टी सर, No. dt। Wrong. खाली गेस कर रहा है। टी करते इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेट। एस एस, यस सर, यस। व्हाट आर द लिमिट्स? 0 to नो, एस टू t. इंफिनिटी, एस टू इंफिनिटी, एस टू इंफिनिटी। एस टू इन्फिनिटी। अब अपने पास यहाँ पीछे पेजेस भी नहीं है। ओके, यहाँ पे बात करो आपके लिए। लैप्लेस ऑफ cos at, first we find out। Yes, cos at, tell me what? S by S square plus A square. Minus S by S square plus B square. S square plus b square. Okay, this is s by s square plus a square minus s by s square plus b square. Okay, now by division of t, or we say division by t, by division by division of t property. So what division? Laplace of cos इंटीग्रल at cos at minus is equal Laplace cos at minus cos bt when dividing with t,
this is equals to, we have to integrate our whatever the value this is. Assume this value is f bar of s. This value we have to integrate between the limit s to infinity. So this one from s to infinity, s by s square plus a square minus s by s square S plus square b plus square. B square. ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको गैप दे दिया, तकरीबन सीधा भूल गया आप दोनों. अब नाउ माय क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस वन, टेल मी. ऐसे तो नहीं है कि ये नया है आपके लिए, कैसा इंटीग्रेट करेंगे? s by s square plus a square, हाउ टू इंटीग्रेट? कम ऑन. ऐसा क्वेश्चन मैं लिखूं, आंसर मैं लिखूं, सब कुछ मैं करूं क्या? यूवी रूल से करेंगे। अच्छा, यू किसको लेते बेटे? हाँ, यू किसको लेते बोली? एस को सर। हाँ, एस को, वी मतलब यू वी रूल बोले, यू बाई वी बोले. यू बाई वी सर। अच्छा, इंटीग्रेशन में यू बाई वी का फार्मूला आप बनाए, इसका मतलब पीएचडी अवार्ड नहीं कर नहीं। सकते हैं आपको अपन. अगर कोई भी मैथ्स में नहीं। नया फार्मूला बनाए समझो, तो ही विल बिकम ए डॉक्टर. यस। तो यू विल बिकम ए डॉक्टर नाउ. इंटीग्रेशन में यू बाई वी का फार्मूला बनाया. नहीं सर। इट वोंट बी लाइक दिस. 1 by 2 we have to multiply and 1 by 2 we have to divide. 2 से multiply, 2 से divide करना है. s square plus a square minus 2s by s square plus b square. This one we have taken 1 by 2 also outside, s to infinity and ds. Why I am doing like this? Can you tell me the answer? Just क्यों ऐसा करा मैं? Because we know the formula f of x into f dash of x. F of x denominator, numerator f dash of x. If you have this format, then we write our answer will be log of f of x plus c. Yes, sir. See, denominator differentiation, s square का 2s, constant का 0. Yes. तो s square का 2s आ रहा ना, तो इसीलिए मल्टीप्लाई Yes. डिवाइड बाय 2 करे अपन. ये सब बेसिक Yes, चीजें sir. ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ. आप मेरे इंसल्ट हो जा रही इसमें प्रॉब्लम कराना. cos 80, थोड़ा सा गैप आ गया, खत्म. cos bt divided by t is equals to, we have taken 1 by 2 outside, let it be outside only. Now when differentiating denominator, we are getting numerator, so we write our answer Log will be log of s s square plus s plus a square for the first term minus next term for next term log of, log s square plus b square. yes, tell me now, log of s square plus b square for the next term. Yes sir. 1 by 2 log of s square plus b square. Yes, log of s square plus b square. Now log a minus log b, and limits are there, sorry I forget, s to infinity. Now we can't apply the limit directly, because if you apply the limit directly you will get your answer is infinity. That I don't want. कोई भी क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी आता बोल के देखिए आज तक अभी आप? नहीं. नहीं होता. नहीं सर। log a minus log b, we write it as log a log a by b. 5. log a by log तो a plus by b, log a by b, b. correct ना? log a minus Yes. log Sir, square log a, हाँ, okay, plus square here, plus b. yeah, plus. Why I am doing this in detail? Why? Because when I am substituting the upper limit as infinity now, the overall problem will become infinity. वो नहीं होना बल्कि थोड़ा डिटेल में कर रहे Yes sir. हैं. This is 1 by 2 into, now again upper limit minus lower limit is the rule. When substituting upper limit, I am substituting like this. Upper limit is limit s tends to infinity log of s square plus a square log of s square plus a square by s square plus b square. This is about upper limit. You can write as un also, your choice. Minus lower limit, we don't want to change anything. S will become s only, no? Yes sir. Yes.
So there is no S change square here plus A for square the by lower limit. S square plus A square by S square A plus square B plus square. This bracket closed, this bracket will be closed because lower limit are also done. It's equal to 1 by 2. Even though I can't apply the limit here also directly. तो इसके लिए क्या करेंगे? Limit s tends to infinity as it is. When s tends to infinity, now इसके जो front side वाला फॉर्मेट रहता है उसमें 1 by s रहना चाहिए. इसके लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद एस स्क्वायर, पूरे के पूरे टर्म को एस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. ये हो जाता है एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यस व्हाट हैपेंड, एस Yes, स्क्वायर sir. डिवाइडेड बाय, नो नो मैं बाहर बात कर, एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर बिकम्स 1 प्लस व्हेन डिवाइडिंग विद एस स्क्वायर ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय Yes, sir. 1, 1 1 plus plus यस b कम ऑन, square by s square. बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर. वेरी गुड. A square यहाँ पर कुछ भी minus चेंज नहीं है, राइट डाउन एज इट इज. ये प्रॉब्लम एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस है, राइट? Okay, sir. क्योंकि एग्जाम में उन्होंने कैसा भी डिवीजन बाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन देता ही देता. तो अब ये डिवीजन प्रॉपर्टी के साथ एक्स्ट्रा वर्क इंटीग्रल प्रॉपर्टी भी आ जा रहा, तो मैक्सिमम चांसेस है आने के. सो नाउ लुक एट व्हेन s टेंड्स टू इंफिनिटी, आई विल शो यू this one. When this s tends to infinity, this part, this value, because 1 by s format is there now, 1 by s into 1 by s square format है ना, ये जैसा ही s yes sir tends to infinity होता, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, वो टर्म्स बिकम 0. So finally, Okay, what's sir. left of, tell me? 1 log by 1. Uh, 1. 1 by 1 is 1. Log 1 only, right? yes sir yes. Minus log of 1 minus log s A square square plus A square by plus a square divided by By s s square 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 plus 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 b b square. square. मैं यहाँ पर से एक स्टेप थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ. Why? Because we know that log 1 value is 0. Yes, sir. Log 1 value is equals to 0. So when 0 will get minus, ये क्या हो जाता? minus 1 by Log of a by b को अपन minus log of b by a लिख सकते. मतलब our question, if this log 1 is 0, our question is in this form, minus log b by a form, we can take the reciprocal of this. तो okay, sir. फाइनली इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1 by 2 इंटू, कैसा लिख सकते हो बोलिए? log of, log of A square plus B square by A square plus A square plus A वेरी square गुड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहाँ से लाए बेटा? A square sir s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. This is the problem we have done when Laplace of cos at minus cos bt by T. divided by t. मतलब डिवीजन प्रॉपर्टी को तो सॉल्व कर दिए. हाँ, उसके साथ साथ अभी इंटीग्रल प्रॉपर्टी भी है, देख, है ना, दिख रहा है ना आपको इंटीग्रल प्रॉपर्टी में? yes sir तो जैसे इंटीग्रल प्रॉपर्टी वहाँ पे आ जाएगा, उसको आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 बाई एस से मल्टीप्लाई कर दें. तो अब इसको जब खाली अब यहाँ पे लिख देंगे, एक स्टेप में खत्म कर देंगे. when Laplace of 0 to t cos at minus cos bt when divided with t dt. So where is the change? इसके 1 आंसर by में s into 1 बाई एस से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाता है, देखिए 1 बाई 2 1 एस, by 2 s सही है ना? log. लॉग Yes, sir. S एस, square plus B इसको square. लॉग वाले टर्म के अंदर कुछ भी चेंज करना नहीं है आपको. एस Yes, sir. स्क्वायर प्लस S बी square, स्क्वायर बाई एस स्क्वायर S प्लस square plus ए स्क्वायर. इंटीग्रल प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको 1 1 बाई by एस के s. साथ मल्टीप्लाई करना. दैट इज द ओनली डिफरेंस. समझ में आ गया? ये क्वेश्चन Okay. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? Okay, sir. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. Look at the question is next page. I'll take. The question is evaluate
Laplace of e power 2t into integral 0 to t into e power minus t into sin t. I am dividing with t this dt because integral is there and bracket close. पहले तो मेरे को ये बोलिए कितने प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक बाय एक, वन बाय वन देखेंगे. ये कौन सी है? e power 2t मींस First shifting theorem. yes, integral property, again first shifting and division by t property. Division by t. ठीक है ना? ये फर्स्ट शिफ्टिंग दो बार आ Yes, रहा है. ऐसा एडवांस काम मत करिए. e पावर 2t प्लस e पावर माइनस 2t e पावर t वैसा मत करिए. ठीक है ना? Okay. ये प्रॉब्लम को ऐसा कंफ्यूज करके जरा स्टूडेंट वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बट डोंट थिंक इन दैट वे. फर्स्ट वी कैन गो फॉर लैपलेस ऑफ sin t हियर. Laplace of sin t, what's the answer? 1 by, come on, 1 by, come on, 1 by, S square plus 1, sir. ऐसा इतना देते हैं आंसर. Now Laplace of, first we apply division property, sin t by t. What do you mean by division property? What type of change you will get for this one? बोले क्या होना चाहिए change? From s to infinity, To infinity. we have to integrate this term, s square plus 1 square d. Now what is the answer of this? Integration 1 by x square plus a square का answer. What happened? Sin t again. क्या बोल रहे भैया? This is tan inverse of x. Oh, integration, 1 by right? x Yes. square plus a square is tan inverse of x between the limits s to infinity. Upper limit is tan inverse of infinity minus lower limit. मैं ऑलरेडी इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, फिर भी आप आंसर नहीं दे रहे हो. दिस इज 5/2 minus tan inverse of x. You can go through the previous recordings में देख सकते हैं, जहाँ पर भी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करा हूँ. 5/2 means it is cot inverse of x, because tan inverse of x plus cot inverse of x value is 5/2. Already we have shown that. याद है आपको? नहीं भूल गए? याद है. Sin t divided by t. Now division by t property is done. Now apply this first shifting. Now by first shifting theorem, Laplace of e power minus t sin t divided by t is equals to sin t divided by t. Answer is what? Cot inverse of s. yes. And where s is changes to S plus 1. s plus 1. This is equals to Cot inverse of S inverse plus of 1. s plus 1. अभी मैं फिर थोड़ा गैप ले लिया आपका पौष्टिक 2-3 days, इससे पूरा वापस से 0 हो जाएंगे. Cot inverse of s. 1, 2 properties are done. Now by which property? Integral property. By integral property, Laplace of integral 0 Integral to 0 t to infinity. E power e power minus t minus t sin t by t sin t by t dt. dt is equals to what I said just now. Where is the change? सिर्फ 1 by s से मल्टीप्लाई Integral करना है बस, और 1 कुछ नहीं.
है ना, Yes. cot inverse of, Cot inverse s plus 1. S plus 1. so this is also done. Now we have one more. Again, First shifting theorem. yes, again, first shifting theorem. Final answer you will get it. E power Laplace 2 inverse t Laplace e power 2t integral integral 0 to t e power minus t t sin t sin t by t by t is equal dt. to sin t by t dt. Okay. Is Is equal equals to, to again s coefficient is +2 here. तो कैसा लिखना है? s minus डायरेक्ट लिख s दो, e 1 equals by s is changes to s s minus minus s cot minus inverse 2 of cot s minus 2 plus s 1 minus 2 plus 1 कितना होता? S minus s 1. minus 1. That is the final answer of this problem. ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ये है, मतलब नॉट डायरेक्ट, आपको कितने उसमें प्रॉपर्टीज है वो पूरे के पूरे अप्लाई करके करना है। और मैं यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपको, इसको आप मेरे को करके व्हाट्सएप पे सेंड करिए तो मेरे को पता चलता आप लोग क्या करोगे। ऐसा हो रहा है तो फिर मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही बोल जा रहा हूँ, मैं ही प्रॉब्लम, मैं ही आंसर। लैप्लास ऑफ 0 to t e power at माइनस e power bt डिवाइडेड बाई टी। ये कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है? अभी जो अपन आज करें ना, cos at माइनस cos bt बाई टी, ये Yes, sir. इससे रिलेटेड है, इससे। ठीक है, इसको कैसा करा मैं एक बार आप देख लेना और उसके हिसाब से आप लोग तो करेंगे आप, ठीक है ना। Yes sir. Okay, sir. तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। आगे होमवर्क और सेकंड क्वेश्चन, लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t ओके sin t बाई टी। अगर आप सही से समझ गए तो इसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अभी कर दिया, इसका काम मैं कर दिया अभी, है ना। जी Yes सर. sir. sin t बाई टी 0 Yes to t कर दिया, मैं इसको बस आधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको करने के लिए, ठीक है। और नंबर थ्री लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t e पावर t sin t डिवाइडेड बाई t इंटू टी। तो ये तीन क्वेश्चन के सोल्यूशन आप अच्छे से करके पीडीएफ बना के मेरे को सेंड करिए, आई चेक इट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो और अपने पास Okay. एक टॉपिक बाकी है, एक टॉपिक है इसमें अपने को करना है। एक मिनट। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आप सोल्यूशन करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। तो अब वी आर नाउ अबाउट टू फिनिश द लैप्लास ट्रांसफॉर्म पार्ट। उसके बाद अपने को इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहता, तो अपने को जो करना है वो नेक्स्ट क्लासेस में पीरियोडिक फंक्शन बताना है आपको, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसका ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट बट इज देयर इन सिलेबस। एंड डिराक डेल्टा फार्मूला, मतलब एक क्लास आपको और एक ज़रूरत रहती है अगर आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस अगर समझ के कर रहे हैं तो इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन मेरे को आज ही बताइए आप, मैं चेक करता हूँ आप लोग कैसा करें। तो और एक और क्लास होगी इसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना रहता। इनवर्स Okay, sir. लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सब प्रॉपर्टीज को प्रूफ नहीं करना है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रूफ करना है। उसके बाद में कन्वोल्यूशन थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली ये वीक में लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी खत्म हो जाता। ऑलरेडी बीटा गामा फंक्शन खत्म हो गया, तो JNTU स्टूडेंट्स जो आप पढ़ रहे हैं अभी दोनों भी
दोनों को भी बीटा गामा फंक्शन भी खत्म हो गया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये बीच में हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको अच्छा आपके लिए एक और क्लास अरेंज कर रहा हूँ मैट्रिसेस की M1 के लिए, और एक स्टूडेंट ज्वाइन होकर आपके साथ, मैं आपको अपडेट देता हूँ क्या करना है। बीटा गामा फंक्शन ओके क्लास खत्म हो गया ना, तो वो टाइम पे मैं एक और एक क्लास अरेंज कर रहा हूँ आपकी। ओके सर तो मैट्रिसेस के 2 यूनिट कंटिन्यूअस बताना है M1 के, ठीक है। ओके सर ओके सर वो स्टूडेंट से कंफर्मेशन लिए बाद मैं आपको मैसेज देता हूँ अपडेट। ओके सर ओके, लेट अस एंड ऑफ दिस मीटिंग। ओके थैंक यू सर। आज शाम में है सर ट्यूशन?